ऑटो स्टॉक्स में भी आज खराब मार्केट में अच्छा मूव आया था वो है मारुति। वहाँ पे एक बड़ी चेंज ऑफ स्ट्रेटजी, चेंज ऑफ कमेंट्री नज़र आई और बाजार काफ़ी, इनफैक्ट अगर आप इंडेक्स सेंसेक्स में देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक हो गया था मारुति। आज हमारे साथ ऑटो एनालिस्ट भी एक जुड़ रहे हैं और वो हमसे शेयर करेंगे कि ये जो कमेंट्री आई है उनके पेरेंट कंपनी की, जापानीज मिस्टर काले जुड़ रहे हैं, वो क्या वाकई में इतनी मीनिंगफुल है कि अर्निंग्स, बाजार ये भी फैक्टर इन कर रहा है कि अर्निंग्स कब से चेंज होना शुरू होंगी। काले साहब, बहुत लंबे समय तक मार्केट ये बात पॉइंट आउट करता रहा कि सीएनजी में अच्छा कर रहे हैं, पेट्रोल पैसेंजर व्हीकल्स में मार्केट शेयर लूज हो रहा है, लेकिन ईवी में क्या करना चाहता है मारुति। अब फाइनली एक बड़ा रोड मैप दिख रहा है 10,000 करोड़ का कैपेक्स। ये कितना मीनिंगफुल आपके हिसाब से है मारुति के स्टॉक के लिए? देखिए, डायरेक्शनली दिस इज अ वेरी बिग पॉजिटिव बिकॉज अब तक क्या हो रहा था कि मारुति में everyone was concerned कि what will happen to their EV strategy, EV market share if industry moves towards EVs. मारुति ने अब तक कोई detailed plan नहीं दिया था on their EV strategy. While more details are yet to come in, but at least we have a direction कि Maruti is pretty committed via Suzuki investing around 10,000 odd crores in India. And not only for India, maybe that could be a global opportunity as well. So India will become a manufacturing base. So ये जो multiple का होता है in terms of the stock multiple, while in the next 2 to 3 years earnings में ज़्यादा कोई difference नहीं होगा because of this announcement, but investors were concerned over the multiple, whether Maruti will be a meaningful player in the EV space. And with this announcement, at least they have some kind of comfort that Suzuki is committed to the electric vehicle prospects of Maruti in India, as well as India becoming a manufacturing base for globally possibly as well. All right, absolutely. Mr. Kale, एक और चीज़ जो आपसे समझना चाहेंगे कि पूरे स्पेस को आप ऑटो पार्क को कैसे हम यहाँ पे इवैल्यूएट करें, क्योंकि जो एक बड़े इनके लिए हेडविंड्स थे सेमीकंडक्टर के, चाहे शॉर्टेज हो वो, और एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस आ रही है ऑटो स्टॉक्स ने देखी है। हालांकि अब जिस तरह का अपमूव हम देख रहे हैं मारुति में, हीरो मोटोकॉर्प में या एमएनएम पे पीछे के कुछ दिनों से, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या इस स्पेस के लिए क्या वो हेडविंड्स जो है वो अब टेलविंड्स हो गई हैं? So I think Feb end तक जब तक ये war like situation create हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, तब तक things were looking pretty good for the auto sector. The worst was kind of getting behind us in terms of raw materials. Fuel prices were under control till that point of time. The supply situation, which was a major issue in the last 1 year, was easing off. But all these headwinds had again come in the last 1 month. Ukraine or Russia के war के बाद raw materials had shot up substantially. Close to 10 to 13% increase in raw material index, which could have an earnings impact in the following year. Because of which the stocks had corrected sharply. So in the medium term, it will be news flow driven. Because there will be some bit of sentimental impact on demand because of the crude prices moving up sharply, as well as some bit of earnings impact because of the raw material prices moving up. However, we would recommend investors to invest in domestic stories till this global situation gets sorted out. So something like a Maruti and Ashok Leyland, or even a ancillaries may Minda Industries also, Minda Corporation also. Some of the domestic stories will be better placed to play in this volatile and uncertain situation of the war. All right, Mr. Kale, good afternoon. Of course, यहाँ पर concerns raw material से जुड़े तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक और रिसर्च ये भी कहती है कि आउटपुट की अगर बात करें, अप्रैल से ऑटो कंपनीज पर्टिकुलरली आउटपुट रिडक्शन के बारे में सोच सकती है, ओइंग टू द रीजंस कि चाइना, हांगकांग से जो कंपोनेंट सप्लाई होते हैं उसमें आप दिक्कतें आ रही हैं। ऑफ कोर्स केसेस वहाँ पर जिस तरह से बढ़ते हुए या एक तरह से वापस निकलते हुए दिख रहे हैं, तो क्या लगता है आउटपुट प्रोडक्शन वाइज ऑटोमोबाइल स्पेस कैसा रहेगा? Yeah, I think it will be very company to company specific. Last chip shortage issue of the last 1 year, maybe हमने देखा कि there were certain companies which were doing much better than the other. For example, Tata Motors passenger vehicles का supply side issue was not as high as what say Mahindra saw initially, and then even Maruti had
fallen prey to the chip shortage issue. So this will be very, very company specific. Which company has what kind of tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 structures, from where their component sourcing is coming in. So it definitely there will be an impact on most companies, but the extent of impact will be different for different companies. And I think only time will tell which companies are being able to manage it much better. जय, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। ये जय काले थे, मारुति के बारे में बता रहे हैं, बाजार कैसे रीड कर रहा है और बाकी अपना सेक्टर पे भी बता रहे थे अपना व्यू। आगे चलते हैं, लेकिन एक